Good morning, my dear students, and welcome to today's video lesson. Students, I hope all of you are fit and fine in your homes and you're taking care of yourself as well as others around you. Dear students, it's a time of taking precautions, so please don't slip up and be serious about precautions. Take precautions wherever you can and be sincere about them. So, dear students, today we have to once again read the chapter from Moments in the Kingdom of Fools. This chapter is very important. It's a very amazing story, which is also telling you about a very significant and important life skill. What is that? I'll get to that later. Okay, but now let's resume our chapter and start our lesson. Okay, so I hope all of you are ready. Please take out your English supplementary reader book Moments and let's begin with page number 21, and we have to read from Before the Death of the King. Before I tell you about today's chapter, I would also like to remind you what we people have read up to now. What we have read up to now is, firstly, we got to know that there is a kingdom of fools where day is night and night is day. Even the animals of that kingdom behave like that. Then one day, a guru and his disciple, they both came to that kingdom of fools. They both came to that city. There, what they found that place very strange. And then what happened? They got to know that everything had the same price. Everything had the same price. It was one doodoo. It was one doodoo. So when they got to know that, they got quite happy. Okay, they had their fill. They ate a lot and filled up their stomachs. But then the guru, he asked his disciple that let's leave this place. Why we should leave this place? Because this is a place of fools and these fools cannot be trusted. So then the disciple, he refused and he stayed there. Then on the other hand, what starts happening is that a thief dies while stealing. Okay, a thief, he was trying to steal something. He was trying to steal from a merchant's house and there was a wall which fell upon him and it killed him. Okay, so then the court case started in which the king, he is trying to find out the real culprit behind the death of the thief. Okay, so now let's read and let's find out who the real culprit is. Already in the court is the rich merchant, okay, whose house it was. Okay, then in the case, who has come? The bricklayer, okay, mistri, the mason, जिसने वो wall बनाई थी. Okay, he is already in the case. So they have been tried. And now lastly what had happened, the bricklayer, he was declared guilty by the king. So obviously he is going to defend himself. What's that defense? Let's read and find out, dear students. Before the king could order the execution. King could order the execution means फांसी. Okay, जो execution कहता है act of killing होता है. ओके, किसी को एग्जीक्यूट करना मीन्स किसी को मारना. द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड. प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्ट करना. उसने गुहार लगाई. प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स. सो ही इज आस्किंग द किंग टू कंसिडर हिज वर्ड्स बिफोर द किंग डिलीवर्स हिज जजमेंट, बिफोर ही गिव्स हिज ऑर्डर. It's true, I built this wall and it was no good.
So he is accepting his mistake. He is agreeing that yes, I built the wall and it was no good. No good means it was not good in quality, it was not strong as it was, okay, as it should have been. But that was because my mind was not on it. Now see, he is claiming distraction, okay. He is saying he was distracted, his mind was not on it. उसका फोकस नहीं था, ध्यान नहीं था उस वॉल को बिल्ड करने पे, ओके. सो वो अपने डिस्ट्रैक्शन को बता रहा है. रीजन किस चीज का? कि वो जो वॉल थी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, ओके. वॉल की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इस वजह से वो क्वालिटी अच्छी क्यों नहीं थी? क्योंकि वो डिस्ट्रैक्टेड था. I remember very well a dancing girl. Okay, now see, he has introduced a new character, a dancing girl into this court case. Okay, who was going up and down that street all day. Going up and down the street means वो रोड पे जा रही थी, okay, रोड पे जा रही थी वो, with her anklets jingling. Anklets क्या होता है? Anklet is an ornament which women wear in their foot. पायल भी कहते हैं जिसे. That's an anklet. Okay, so वो जिंगल कर रही थी, वो साउंड जो होती है ना उसमें छम छम छम, that's jingling. And I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. So what happened? He was unable to keep his mind, he was unable to focus. Why? Because of that dancing girl and the sound of her anklets. You must get that dancing girl. You must get that dancing girl means आपको उसे पकड़ना चाहिए, उसे अरेस्ट करना चाहिए. I know where she lives. So he is aware where that dancing girl she lives, and he has fix the blame on the girl now, okay. The blame is not on him anymore, the blame is on the dancing girl, okay. Merchant, what he did? The merchant, first of all, what he did, he fixed the blame on the bricklayer. Then the bricklayer has fixed the blame on the dancing girl. Now let's read and find out the dancing girl will fix the blame on whom. I expect this to happen. Let's see whether it happens or not. You are right. Now the king is speaking. Okay, the king is speaking. He is saying to the bricklayer, you are right. The case deepens. Deepens means there is more information in it. There is more to know in it. Okay. We must look into it. We must look into it means we must inspect it. We must find out more about it. We must investigate it. Okay. It is not easy to judge such complicated cases. So if there is such a there is such a complicated case, it's not easy to judge that, right? The king, he is, in this, by these lines, he is explaining his intelligence, okay. But how intelligent he is, you all know it very well, right? He is as intelligent as the famous cartoon cat Tom going into the doghouse of Spike, right? You all have seen Tom and Jerry. You remember Tom and Spike. Spike, who's the dog, and when he sees Tom, he beats him quite badly, right? Why? Because Tom is very intelligent, okay. So comparatively, our king, he is even far intelligent than Tom, okay. So what is complicated? Complicated is something complex in nature, okay, something which is not easily understandable, okay, which cannot be comprehended very easily, जो कि थोड़ी मुश्किल होती है, okay, थोड़ी ट्रिकी होती है.
Intricate is a word, students. Okay, you can look it up in the dictionary. This word will tell you more about complications. Okay, intricate, INTRICATE. Okay, so let's see what the king is what the king has to say now. Let's get that dancer wherever she is. So now he has ordered, now let's get that dancer. Okay, the dancing girl, now an old woman. So the dancing bricklayer was not young, right? He was an old man now. So the dancing girl was also an old woman. Came trembling to the court. Trembling means to shake with fear. वो डरते डरते कांपते कांपते वो ऐसे आई कोर्ट में. Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? So the king has asked his question to investigate. Okay, he's asking whether what the bricklayer said that was true or not. Did you see him? So did you see him? क्या तुमने उसे देखा था? He's asking, he's giving the poor woman, the old woman, a chance to speak the truth. Okay, and tell him what's true and what's false. Yes, my lord, I remember it very well. Okay, मुझे अच्छे से याद है. Remember it very well means मुझे अच्छे से याद है कि ऐसा हुआ था. So you did walk up and down. So you did means तुमने ऐसे किया था. Okay, you did walk up and down with your anklets jingling. Okay, तुम्हारी anklets jingle हो रही थी. You were young and you distracted him. So now the king, he is fixing the blame on the dancing girl. Okay, तुमने ही उसे डाइवर्ट किया, उसके अटेंशन को डाइवर्ट किया, उसके फोकस को डाइवर्ट किया, तुमने उसे डिस्ट्रैक्ट किया. So he built a bad wall. इसकी वजह से एक बैड वॉल बिल्ट हुई. It has fallen on a poor burglar and killed him. Now see, he is using the word poor for the burglar. वो उसके लिए बेचारा है, वो उसके लिए, किसी भी किंग के लिए ये स्टेटमेंट, कोई भी इंटेलिजेंट किंग ये स्टेटमेंट नहीं बोलता. कोई नॉर्मल ज्यादा इंटेलिजेंट भी ना हो वो भी नहीं बोलता. बट अ फूल किंग कैन से दिस. ओके, उसके लिए वो बर्गलर जो चोरी कर रहा था वो क्रिमिनल नहीं है, वो पुअर है. You have killed an innocent man. Now he is also calling the burglar innocent. Innocent means जिसकी कोई गलती ना हो, जिसका कोई क्राइम ना हो. ओके, तुमने उस जिसने क्राइम कमिट ही नहीं किया, तुमने उस बेचारे को मार दिया. You will have to be punished. So अब किंग ने कह दिया कि भाई now we are going to punish you. She thought for a minute and said, अब उसने भी सोचा कि लाइक अब मैं पनिशमेंट क्यों लूं. So let's see what she does next. My lord, wait. I know why I was walking up and down that street. So अब उसको याद आ गया कि क्या रीजन था कि वो उस स्ट्रीट पे बार बार आ जा रही थी. ओके, I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. So goldsmith कौन होता है? जो सुनार होता है, जो गोल्ड की ज्वेलरी बनाता है. So उसने कहा कि I had given him some gold कि वो मेरे लिए कुछ ज्वेलरी बना दे. He was a lazy scoundrel. Okay, lazy means lazy, you know, आलसी, and scoundrel it's an inappropriate word which means a dishonest man. So never call someone that. It's not an appropriate word, but it's there in the story. So yes, so he made so many excuses, said he would give it now and he would give it then. So now she's putting the blame on the goldsmith. कह रही कि goldsmith की वजह से उसने बार बार बुलाया कि आओ, कि अब दूंगा तब दूंगा,
फिर दूंगा, बाद में दूंगा, लाइक दिस. एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल डे. सो उसने बार बार उसको बुलाया पूरे दिन. ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स. सो उसने कह दिया कि भाई उसने मुझे डजन, यू नो टू डजन कि 10-12 बार उसने मुझे बुलाया. डजन इज 12. दैट वॉज वेन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी. ओके, सो ब्रिकलेयर ने कब देखा? जब वो आ जा रही थी बार बार. इट्स नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, इट्स द डैम्ड goldsmith's fault. Okay, so again now she has declared that the fault it's of the goldsmith. Poor thing, she's absolutely right. Again an evidence of how intelligent our king is. Okay, he has declared that yes, this lady, this old woman, she is absolutely right. Thought the king, weighing the evidence. Weighing the evidence means जो सब evidence होता है सबूत, and weighing the evidence means उसको नापते हुए, उसको जज करते हुए, evaluate करते हुए. We have got the real culprit at last. Get the goldsmith wherever he is hiding at once. So now he has said that find the goldsmith wherever he is hiding at once. Okay, एक कहीं भी उसको एक बारी ही में ही लेकर आओ. ओके, चाहे वो कहीं भी छुपाओ. और किंग के अकॉर्डिंग अब हमें रियल कल्प्रिट, रियल क्रिमिनल जिसने क्राइम करा है, हु इज द रीजन ऑफ द डेथ ऑफ द बर्गलर. ओके, द किंग्स बेलिफ्स सर्च्ड फॉर द गोल्डस्मिथ. बेलिफ्स क्या होता है? सिक्योरिटी ऑफिशियल ऑफ द कोर्ट. ओके, किसी भी कोर्ट में जो सिक्योरिटी ऑफिशियल होता है, जो लोगों को मैनेज करता है, जो कोई अगर कोर्ट कहता है कि ही इज नॉट बिहेविंग अप्रोप्रिएटली, ही इज इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. मेनी टाइम्स यू माइट हैव हर्ड कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में की वजह से इस पर किसी पर्सन को जेल में डाल दिया गया, तो वो बेलिफ ही करता है. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? कोर्ट की बात ना मानना या फिर कोर्ट को प्रॉपरली रिस्पेक्ट ना करना. ओके, सो कंटेम्प्ट इज अ वेरी बैड थिंग. कंटेम्प्ट किसी का भी हो सकता है, वो कोर्ट का हो सकता है, फैमिली मेंबर्स का हो सकता है, किसी इंडिविजुअल का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है. सो ऐसी सिचुएशन लेकिन जब एक कोर्ट में होती है तो बेलिफ जो सिक्योरिटी ऑफिशियल होता है वो एक्ट करता है किंग के या जो भी जज होता है उसके ऑर्डर्स पे. द किंग्स बेलिफ searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shops. So goldsmith छुपा हुआ था किसी कोने में अपनी शॉप में. When he heard the accusation, accusation क्या होती है? जो चार्ज, जो उस पे आरोप लगाए जाते हैं against him, he had his own story to tell. Okay, so उसने अपनी कहानी बतानी अब स्टार्ट कर दी. My lord, he said, I am a poor goldsmith. मैं तो सिर्फ एक बेचारा सुनार हूँ. It's true, I made this dancer come many times to my door. उसने मान लिया कि हाँ डांसर भी है जो वो सच बोल रही है. I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's orders. So मैं इसलिए नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि जो वो रिच मर्चेंट था कोई, उसका ऑर्डर फिनिश करना था, मुझे उसका काम पहले पूरा करना था. They had a wedding coming and they wouldn't wait. उसने कहा कि एक शादी होनी थी and they wouldn't wait. वो उन्होंने वेट करने से मना कर दिया. अब उसकी स्टोरी में उसने नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया. Who is this rich merchant? You know how impatient रिच मैन आर. उसने कहते कि भाई ये रिच मैन जो होते हैं इम्पेशेंट होते हैं. इम्पेशेंट मीन्स जो वेट ना कर सके. ओके, जो कि रेस्टलेस हो, जो वेट ना कर सके. सो उसने नेचर पे, जो रिच मैन का नेचर होता है,
रिच मर्चेंट था उसके ऊपर ब्लेम फिक्स कर दिया. Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry? Made her walk up and down, which distracted this bricklayer. अब जो है किंग जो है वो पूरे ही सारा जो अब तक इवेंट हुआ है, ठीक है, फर्स्टली क्या इवेंट हुआ कि कि पुअर वुमेन की ज्वेलरी वो फिनिश नहीं कर पाया, फिर जिसकी वजह से वो बार बार आई गई और जिसकी वजह से ब्रिकलेयर डिस्ट्रैक्ट हुआ. विच मेड अ मेस ऑफ हिज वॉल. ओके, सो जिसकी वजह से फिर ब्रिकलेयर डिस्ट्रैक्ट हुआ, जिसकी वजह से फिर जो एक बेकार मेस मीन्स जो कि क्लियर ना हो, ओके, जो कि बिल्कुल प्रॉपर ना हो. ओके, सो इम्प्रॉपर वॉल जिसकी वजह से बनी. विच हैज नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम. कैन यू नेम हिम. सो उसने कहा कि अब ये कौन पर्सन है, ठीक है, कौन रिच मर्चेंट है जिसकी वजह से वो खराब वॉल बनी और वो फिर एक इनोसेंट आदमी के ऊपर गिरी और उसको मार दिया. कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो. सो द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस whose wall had fallen. So उसने कह दी कि ओरिजिनल ओनर जो है उस घर का, ओके, जिसकी दीवार गिरी है वही वो रिच मर्चेंट है. सो इन अ सर्कल, सारा इवेंट एक सर्कल में आ गया. सबसे पहले रिच मर्चेंट था, उसके बाद ब्रिकलेयर आया, ब्रिकलेयर के बाद डांसिंग गर्ल आई, डांसिंग गर्ल के बाद गोल्डस्मिथ आया और गोल्डस्मिथ के बाद वापस हमारा रिच मर्चेंट आ गया. तो ये पूरा एक सर्कल में घूमकर ब्लेम जो है वो वापस से रिच मर्चेंट के ऊपर आ गया. ओके, सो दिस इज कॉल्ड आयरनी. इसे कहते हैं आयरनी. ओके, आयरनी इज अ फिगर ऑफ स्पीच एज वेल. विडंबना. ओके, आयरनी ही तो है ये कि उसने किसी और पे ब्लेम डाला, किसी और पे ब्लेम डाला, फिर वो ब्लेम किस पे आ गया वापस से बेचारे जो मर्चेंट के ऊपर ही वापस से ब्लेम आ गया. नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल. ओके, जस्टिस हैड कम फुल सर्कल. आई हैव एक्सप्लेन्ड. ओके, कैसे वो पूरा घूम के पूरा जो चक्र होता है, हम कहते हैं जस्टिस का एक चक्र होता है, पहिया होता है, वो पूरा घूम गया, उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया. थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट व्हेन ही वाज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट. ही अराइव्ड क्राइंग. सो उसको जब रूडली, एक इम्पोलाइट मैनर में, एक स्ट्रिक्ट वे में जब उसे वापस कोर्ट में बुलाया गया, वो रोते हुए आया. Okay, it wasn't me but my father who ordered the jewelry. So उसने अब अपने किस पे ब्लेम डाल रहा है, वो अपने फादर के ऊपर ब्लेम डाल रहा है. Okay, it was my father who ordered the jewelry. He is dead. I am innocent. So उसने कह दिया कि भाई फादर जो है he has died now but I am innocent. मैं innocent हूँ, मुझे छोड़ दो. So dear students, we'll be reading till here only. Okay, अब जो है स्टोरी में अपने डेड फादर को रिच मर्चेंट ले आया है, एंड when we are going to read further we'll find out what will happen, what's gonna happen. Okay, so dear students, this is your lesson for today, and if you have any doubts please comment and let me know. Thank you.